जो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए होगी। तो प्रार्थना के साथ जब मैं था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलना शुरू किया, मैं लिखना शुरू किया और भविष्यवाणियों को अब आप सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। एरोप्लेन टकराएंगे आपस में, या हम अनुमान देखते हैं कि क्रैश होते हैं एरोप्लेन्स किसी प्रॉब्लम की वजह से, मगर दो प्लेन्स टकराने का प्रभु ने मुझे दिखाया है। कई टीम जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से ये विमान जब है टेक ऑफ करने वाला था तभी ये दूसरे विमान से टकरा जाता है और अचानक से धमाके के बाद इस विमान में आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि 367 यात्री जो है सवार थे इस विमान में, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो साल का पहला दिन भी जापान के लिए कुछ खास नहीं रहा था और आज साल का दूसरा दिन है 2 जनवरी और आज एक और बड़ा हादसा होता है। कल ही वहां पर सुनामी भी आई थी और ऐसे में आज की 3 तस्वीरें आप जापान से देखें किस तरीके से रनवे पर ये विमान टकराते हैं आपस में। 367 यात्री उस वक्त उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो सब आनंद फानंद में थे, जो सब डरे हुए थे, लेकिन तुरंत उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दोनों विमान आपस में टकराए तो टकराए कैसे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो कप्तान मौजूद था उसकी सूझबूझ की वजह से ही किसी को किसी तरह की चोट नहीं लगी। जरूर इस विमान में जो है टक्कर के बाद आग लग गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 367 यात्री जो सुरक्षित है फिलहाल। लेकिन अब updates in earlier with a big update coming in regarding casualties. Remember earlier we told you about a Japan Airplanes plane that had caught fire at the Tokyo airport. We're learning that 4 Coast Guard members have been killed in the incident. Remember, there was a Coast Guard plane, a smaller Coast Guard plane that crashed into a larger plane. Now it's the larger plane that had 379 passengers. They were evacuated in safety, but now we're learning the smaller plane that was involved in that collision, the Coast Guard plane, 4 people at least in that plane have lost their lives. Now this is the most recent update we have. Remember, there were 6 crew members on the Coast Guard aircraft that were unaccounted for. We know the captain escaped, but it's the others that question was being raised on. This is a larger plane, a Japan Airlines plane that escaped a devastating fire when it collided with a smaller Coast Guard aircraft at Tokyo's Haneda airport. Now, my colleague Abhishek with us. Abhishek, we just asked you this question a few minutes ago. What happened to the crew members that were aboard the Coast Guard? I believe you told us there were 6 crew members in total and we were accounting for them. Do correct me on that number. I am also sure I think the captain had already escaped. What details can you bring us? Well, unfortunately, 4 people of that unfortunate plane, that Coast Guard plane of Japan, they are reported to having been killed in this incident. We could easily see the smaller plane had collided with this massive plane A350, which was carrying about 367 persons on board, and that collided with a smaller Coast Guard plane. And since then, the search operation was on to find out the remaining people from that Coast Guard plane. About 6 people were on board. Captain was rescued. But now we are learning that 4 of them, they have died. So this is, now so far there was no casualty figure. The